So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है f of x is x square minus 6x plus 5 by x square minus 5x plus 6, which is a rational function. So आपको match the following question पूछा है, x minus 1 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 3 और 5 greater than 5, f of x कहा हो. ठीक है. So this is a very basic question based on the concept of wavy curve. So wavy curve draw करेंगे इसका. So f of x is nothing but ऊपर बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा x minus 2 into x minus 3. सॉरी, न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन है x minus 1 into x minus 5, say x square minus 6x plus 5 divided by डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है x minus 2 into x minus 3. बहुत इजीली फैक्टराइज हो गई. इसका वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे. ठीक. सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. So wavy curve को यूज करके एक रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है. So first let us identify the zeros and poles. So 1, 2, 3 and 5. Right? And out of these 1, 2, 3 and 5, 2 and 3 are the poles. इसका मतलब इस पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन जो है वो इंफिनिटी पे चले जाएगा. ठीक है. So first let us forget about all that and try to draw the wavy curve. तो सबका लीडिंग कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है. सो आप ऊपर से स्टार्ट करके कैन ड्रॉ द वेवी कर्व. सो दिस इज द वेवी कर्व ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है. अब क्या करेंगे, द सेकंड स्टेप टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन इज, सो वेवी कर्व को यूज करके आप पोल्स पे द वैल्यू ऑफ y शुड बी सेंट टू इंफिनिटी. ठीक है. लेट अस डू दैट. सो द पोल्स आर 2 and 3. ठीक है. सो इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को इंफिनिटी पे भेज देता हूँ. सो लॉजिक इज, देखिए, सो इफ द ग्राफ इज कमिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, उसको मैं माइनस इंफिनिटी पे भेजना पड़ेगा. अगर पॉजिटिव साइड से 0 पे जा रहा है तो उसको प्लस इंफिनिटी पे भेजेंगे. ठीक है. सो यहाँ भी पॉजिटिव साइड से इंफिनिटी जा रहा है, सो प्लस इंफिनिटी पे भेजेंगे. सो यहाँ माइनस इंफिनिटी. यहाँ तक ओके. सो एट द पोल्स we send the graph to infinities. So ये वाला part will become this part will become this, and this part will become this. इसके बाद one more analysis that we do is what happens as x tends to infinity. So as x tends to infinity, मेरे f of x जो आप लिमिट्स देखे, लिमिट्स का चैप्टर बहुत इजी. So ये x tends to infinity कर लीजिए. So what is the highest power of x in the numerator? X square. What is the highest power of x in the denominator? वो भी x square. See, 1x square and 1x square. So what happens when x tends to infinity? F of x tends to 1. Okay, infinity square by infinity square. Similarly, minus infinity पे भी f of x tends to 1. Okay, minus infinity whole square by minus infinity whole square. और आप simply x equal to infinity put कर दीजिए ऊपर नीचे. So you get the answer. इसका मतलब है as x tends to infinity, my function is going towards 1. So मान लीजिए a1, that is given. So what happens is this graph tends to infinity. इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है. So it asymptotically goes to 1. Asymptotically goes to 1 as x tends to minus infinity. Similar thing happens as x tends to infinity. इसका मतलब इसको 1 को आप extend किया था, यहाँ भी ये 1 के सामने चले जाएगा. ठीक है. So this is the effective graph of this rational function. ठीक है. So let me draw it nicely once again. So आपको क्या आ रहा है? So this is 1, 2, 3 and 5. So 5 पे 0 है. It is tending to 1 from here. ठीक है. 1 पे जा रहा है. इसके बाद as x tends to 3 पे the graph is tending to infinity, minus infinity. So the graph is something like this. इसके बाद 2 और 3 के बीच में वो infinity पे चलेगा वापस. So the graph is something like this. इसके बाद if in the negative neighborhood of 2 it goes to minus infinity. So minus infinity से लेके 1 पे 0 हो रहा है. And as x tends to minus infinity, the graph is tending to 1. So this is how the graph of this f of x looks like.
Okay. Once you draw the graph, let us try to analyze what is given. So now first question, as x is in between -1 and +1, x -1 और +1 के बीच में रहा है, f of x कहाँ और कहाँ के बीच में है आप देख सकते हैं। f of x is the value of y 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है। So f of x lies between 0 and 1 is okay. So for this p is okay. F of x less than 0 is not okay. F of x is always greater than 0. F of x greater than 0 is also okay. So r is also okay. Okay, f of x is always positive. And f of x less than 1 is also okay. Okay, आप देख सकते हैं the value of f of x is always less than 1. So as x is in between -1 and +1, उसके लिए p, r, s, all the three options are working. Now let us go from 1 to 2. 1 से लेकर 2 के बीच में आप देख सकते हैं f of x is negative. So कौन सा ऑप्शन काम करे? f of x is less than 0 is okay for this. So q is okay. And f of x is less than 1 is also okay. क्योंकि 1 से भी छोटा है. So p and q and s are okay for this. As x is in between 3 and 5, x 3 and 5 के बीच में, y का वैल्यूज क्या है? Again y का वैल्यूज are all negative. So यहाँ भी f of x less than 0 and f of x less than 1. So q and s works for the third problem. And what happens when x is greater than 5? अगर x 5 के बाद में, the function is positive and less than. See? So इसके लिए f of x 0 और 1 के बीच में. So p works, r works and s works. So 1 and 4 के लिए p, r, s are the options. 2 and 3 के लिए q and s are the options. Thank you.